अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ओवैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले देखते हैं आज की टॉप स्टोरीज। 3 घंटे की ताखीर के बाद गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। अमरीकी सदर बाइडन का दोगलापन, गुनाहगार बेटे को सदारती माफी, बेगुनाह आफिया सिद्दीकी रिहाई की मुंतजिर। और ऑस्ट्रेलिया की पहली बाहिजाब खातून सेनेटर फातिमा पैमान से खुसूसी गुफ्तगू। जी, ये थी टॉप स्टोरीज और अब बात करते हैं आज की सबसे अहम खबर और आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट पर। जी, ये है जी गजा जंगबंदी मुआहदा, और गजा जंगबंदी मुआहदा जो है उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। 3 घंटे की ताखीर से ये अमल दरामद शुरू हुआ और मामला जो था वो बुनियादी तौर पर ये था कि अचानक से जो इजरायली जो लोग हैं उन्होंने मांगे 3 नाम, और ये 3 नाम थे उन ख़वातीन के जिन्हें हमास की तरफ से रिहा किया जाना था, और ये 3 नाम फिर दिए गए हमास की तरफ से। और उसके बाद फिर ये जो रिहाई का अमल है, जो सारा जो अमल है ये शुरू हुआ। अब ये जो 3 ख़वातीन थी उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कौन है, और ख़वातीन जो थी ये आज रिहा की जाएंगी हमास की तरफ से। इनमें एक खातून है जी 31 साला डोरॉन स्टेन ब्रेचर, दूसरी खातून है जी 28 साला एमिली दिमारी, और तीसरी खातून जो है वो हैं 23 साला रमी गोनेन। और ये 3 ख़वातीन हैं जो कि हमास की तरफ से रिहा की जाएंगी, और हर खातून के बदले में 30 लोग जो है वो इसराइल की फोर्सेस जो हैं वो छोड़ेंगी। इसराइली कैदी जो हैं वो, यानी कि 90 इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनी जो है वो रिहा किए जाएंगे। तो 90 लोग इसराइल रिहा करेगा और ये 3 ख़वातीन जो हैं वो रिहा की जाएंगी हमास की तरफ से। अच्छा, अब यहाँ पर मामला एक ये भी है कि ये 3 जो ख़वातीन हैं जब ये रिहा हो जाएंगी उसके बाद मरहला वार इस तरीके से टोटल 33 लोग जो हैं वो हमास की तरफ से रिहा किए जाएंगे, और तकरीबन 900 के करीब जो हैं वो लोग इसराइल की तरफ से रिहा किए जाएंगे। आज भी मामला ये हुआ कि 3 घंटे की ताखीर के बाद ये गजा में जंगबंदी जो है वो उसका सारा सिलसिला शुरू हुआ, और इस 3 घंटे की ताखीर के दौरान भी हमले जारी रही, और इन हमलों में 19 लोग शहीद कर दिए गए इसराइली फोर्सेस की तरफ से। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो पूरा ऐलान जब हुआ, इस ऐलान के होने के बाद और आज इस ऐलान पर अमल दरामद शुरू होने के दौरान भी तकरीबन 90 के करीब लोग जो हैं वो शहीद कर दिए गए, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। तो ये सारा जो मामला है ये ऐसा है कि एक तरफ तो इसराइल ने कहा कि हाँ, हम जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके हमले जो हैं वो जारी रहे। अब ये जो मरहला है वो है कैदियों की रिहाई का। अब ये मरहला तकरीबन 7 सवा 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शुरू होना चाहिए, यानी कि इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये मामला जो है वो अब शुरू होने वाला होगा। ये 3 ख़वातीन जिनकी हमने आपको तस्वीर दिखाई, ये 3 ख़वातीन जो हैं वो रिहा की जाएंगी हमास की तरफ से, और उसके बाद जो है वो ये ख़वातीन जो हैं वो चले जाएंगी इज़राइल के पास, और इज़राइल जो है वो इनका फिर मुकम्मल तौर पर मेडिकल चेकअप करेगा, इनका जो है वो साइकोलॉजिकल चेकअप होगा, और फिर जो मेडिकल चेकअप और साइकोलॉजिकल चेकअप के बाद जो है वो ये ख़वातीन अपने जो घर वाले हैं उनसे मुलाकात हो सकेगी इनकी। अच्छा, एक और दूसरी बड़ी अहम ख़बर भी है, वो है अमेरिका से। बुनियादी तौर पर अमेरिका का मामला ये है कि अमेरिका में नए सदर की हलफ बर्दारी की तकरीब है जो कि होनी है कल। अब ये जो नए सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे और जो बाइडन साहब जाएंगे, जो बाइडन साहब की तरफ से एक मामला ये हुआ कि उन्होंने जाते जाते बहुत सारे लोगों को माफ़ी दे दी, जिनमें उनका अपना गुनाहगार बेटा भी शामिल है। लेकिन एक खातून आफिया सिद्दीकी वो रिहाई की मुंतज़िर है। क्या जाते जाते जो बाइडन उन्हें भी आज़ादी का परवाना, उनका जो आज़ादी का परवाना है उस पर दस्तखत करेगा, या फिर ये मामला यूं ही लटकता रहेगा और फिर डोनाल्ड ट्रंप से हम उम्मीद लगाएंगे कि ये जो इस मामले को आगे लेकर चले। तो इन दोनों मामलात पर हम बात करेंगे। सेनेटर मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं हामी से, और उनसे हम इन दोनों हवालों से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. میں چاہوں گا کہ ان دونوں معاملات پر آپ سے گفتگو کروں. پہلی بات، چونکہ ظاہر ہے آپ کی جو آواز تھی فلسطین کے حوالے سے، اور جتنا زیادہ آپ اس حوالے سے ووکل تھے، کئی مرتبہ آپ جیل بھی گئے، حکومت نے آپ کو جو ہے وہ آپ کی آواز دبانے کی بھی کوشش کی. آج وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ جب یہ ایک سیز فائر کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. تو مجھے بتائیں گے کہ اس وقت آپ کے کیا جذبات ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ تھرڈ سٹیج تک، یعنی جو غزہ کی ریکنسٹرکشن سٹیج ہے، اس تک پہنچ بھی پائے گا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اویس صاحب. ویسے بہت بڑا واقعہ ہے غزہ کے اندر. 468 دن جو مزاحمت ہوئی، آزادی اور حریت کی جدوجہد ہوئی، اور غزہ کے عوام نے، حماس نے، مجاہدین نے، خواتین اور بچوں نے جو تاریخ رقم کی، وہ غیر معمولی ہے. یہ جو سیز فائر ہے، یہ فتح ہے اہلیان غزہ کی، اہلیان حماس کی، اور اس سے راستے کھلیں گے آزادی فلسطین کی، آزادی مسجد اقصی اور قبلہ اول کی. اور اس سے پوری دنیا میں جو آزادی اور حریت کی جدوجہد کرنے والے ہیں، ان کے حوصلے بلند ہوئے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی واضح شکست ہے اسرائیل کی اور اسرائیل کے سرپرستوں کی، جس میں یورپی یونین بھی شامل ہے، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، اور یہاں تک کہ انڈیا نے بھی اپنا مین پاور اور اپنا اسلحہ جو ہے وہ سپلائی کیا تھا. جی بالکل. تو یہ ان کی کولیکٹیو ایک شکست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے بڑھے گا اب. اور آج جو میں نے ویڈیو کلپس دیکھے، تصاویر دیکھے کہ حماس کے جو مجاہدین ہیں وہ نکل آئے ہیں، اور سیز فائر کا وقت جیسے ہی شروع ہو گیا، سیز فائر کے اوپر عمل درآمد جیسے ہی شروع ہو گیا، تو اور انہوں نے پولیس کی جو ذمہ داری ہے، جی وہ انہوں یعنی نے سنبھال لی. عوام کے تحفظ کی آرگنائز کرنے کی ذمہ داری، وہ سنبھال لی. تو سچی بات یہ ہے کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. 468 دن پوری دنیا اپنی ٹیلی ویژن سکرین، اپنے موبائل سکرین پر لائیو اس جینوسائیڈ کو دیکھتی رہی. اور یہ وہ جینوسائیڈ تھا جس کو آئی سی جے نے، آئی سی سی نے، یونائٹڈ نیشن نے، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ یہ جینوسائیڈ ہے، جینوسائیڈ ہے. لیکن انہوں نے صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، عزم کے ساتھ، ایثار و استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا، اور آج ان کی جیت ہوئی ہے. تو میں اس کو ایک بہت تاریخی جیت سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا. انشاءاللہ ہماری دعا تو یہی ہے. لیکن مطلب میں اگر پرسنلی اپنی بات کروں تو مجھے اسرائیل کے اوپر کوئی بھروسہ تو نہیں ہوتا، کیونکہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہے بنیامین نیتن یاہو، اس نے ابھی کچھ دن پہلے ہی یہ بات کی ہے کہ ہم نے یہ جو معاہدہ ہے یہ تو کر لیا ہے، لیکن ہم پھر بھی حملے کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اس کی طرف سے جو بیان ہے وہ تشویشناک تو ہے. اور پھر بہت سارے اس کے جو سینیٹر، جو اس کے کیبنٹ کے ممبرز ہیں، انہوں نے ریزائن کر دیا کہ نہیں جی آپ کو یہ جنگ بندی نہیں کرنی چاہیے تھی. تو جنرل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تو ان کا ظلم سے بھرپور ہے. دیکھیں نیتن یاہو نے یہ تو ان کی شکست ہے، اسرائیل کی شکست ہے. آپ دیکھیں جیسے سیز فائر کا اعلان ہو گیا تو اہلیان غزہ نکل آئے، وہ سیلیبریٹ کرنے لگے، جشن منانے لگے، نعرے لگانے لگے، ناچنے لگے، ڈول بجانے لگے. حالانکہ ان کے گھروں میں 2-2-3 شہداء پڑے ہیں، ان کے گھروں میں اب بھی 2-2-3 زخمی ہیں، ان کے گھروں کے صحن ابھی تک خونالود ہیں، اور ان کے سارے گھر مسمار ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں. لیکن اس حالت میں بھی وہ جشن منا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ وہ جیت چکے ہیں. وہ قوت اور طاقت کو صبر و استقامت کے ساتھ شکست دے چکے ہیں. اور دوسری طرف آپ آئی ڈی ایف کو دیکھ لیں، اس کو تو اسرائیل ڈیفنس فورس کہتے ہیں، لیکن میں اس کو اسرائیل ٹیررسٹ فورس کہتا ہوں. یا نیتن کی کیبنٹ یا اسرائیل کے حکومت کی ایوانوں کو دیکھ لیں، وہاں ماتم ہیں، وہاں سوگ ہیں، اور وہاں لوگ استعفے دے رہے ہیں، اور وہاں ایک دوسرے کے اوپر الزامات شروع ہو گئے ہیں، بلیم گیم شروع ہو گیا ہے، اور حکومت گرنے کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں. تو ظاہر ہے ان کو شکست ہو چکی ہے، اور شکست بڑی کڑوی ہوتی ہے، بڑی تلخ ہوتی ہے. اس لیے اس کا جو پرائس ہے، پولیٹیکل پرائس، وہ نیتن یاہو کو اور ان کی کیبنٹ کو اور ان کی حکومت کو انٹرنلی بھی وہ پے کرنا ہوگا. لیکن جہاں تک حملوں کی بات ہے، دیکھیں انہوں نے جس انداز سے ظلم کیے، مثلا سیز فائر سے کوئی 5 دن پہلے انہوں نے ایسے ہتھیار استعمال کیے جس سے 8,000 لاشیں ہوا میں تحلیل ہو گئی. جی بالکل، بخارات بن گئی. 8,000 لاشیں، 8,000 لاشیں ہوا میں تحلیل ہو گئی. کون سا ظلم ہے جو انہوں نے نہیں کیا؟ اس لیے یہ حملے ان کے عزم کو
शिकस्त नहीं दे सकती। ये ये बात छोटी बिल्कुल मोटी दुरुस्त है चीजें आपकी अब कि एक तरफ उनको फ़लस्तीनियों का और पीछे नहीं गज़ा हटा वालों का सकती। और फ़लस्तीन इसराइल के वालों का पास और कोई रास्ता ही नहीं अज़्म था, है और अमेरिका यूरोप के साथ और कोई रास्ता ही नहीं था बिल्कुल उनके सामने हम सीज़फायर ये कह करने का। सकते हैं कि देखें अज़्म का और जुल्म का जब मुकाबला होता है तो अज़्म ही जीतता है। अब आते हैं आफिया सिद्दीकी साहिबा की तरफ, एक उनका अज़्म है और ज़ाहिर है इस पर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है, आवाज़ें भी उठाई जा रही हैं। आफिया सिद्दीकी साहिबा के हवाले से जो एक तरीके से माफ़ी की अपील है वो जो बाइडन को दे तो दी गई है, लेकिन अब एक दिन रह गया है, जो बाइडन ने हट जाना है और ट्रंप ने आ जाना है। क्या देखते हैं आप इस हवाले से? देखें, डॉक्टर आफिया का केस जो है ये बहुत अहम केस है और गुज़िश्ता 22 साल में पहली मर्तबा इतना फैसला कुन मोड़ इस मुहिम के अंदर आया है। डॉक्टर आफिया की आजादी अब एक दस्तखत के फासले पर है और डॉक्टर आफिया की आजादी के लिए उस दस्तखत जो बाइडन करेगा उसके लिए एक फोन कॉल की जरूरत है आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान की तरफ से, या शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से, या जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। ये जाएगा, दस्तखत हो जाएगा और डॉक्टर आफिया आसानी से बाहर निकल आएगी। 52 साल डॉक्टर आफिया मार्च 2025 में पूरे 22 साल हो जाएंगे उनको कैदबंद और टॉर्चर सेलों के अंदर। 7,966 दिन हो गए हैं। 7,966 दिन बहुत बड़ी उम्र है, बहुत बड़ी उम्र है। इसलिए उनकी जो क्लेमेंसी की पिटीशन है, माफीनामे की दस्तावेज है, वो बाइडन के ऑफिस तक पहुंच गई है, बाइडन के मेस तक पहुंच गई है, बाइडन के ऑफिस के जाती स्टाफ से राब्ता तक हो चुका है। अब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक फोन कॉल का फासला है, उसके नतीजे में वो आसानी के साथ जो है वो रिहा हो सकती है। तो बिल्कुल बिल्कुल आज ये अमेरिकी बड़ा अहम दिन है ये, और ये फ़ोन कॉल हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल, एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बैक ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं और अब आपको लेकर जाते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ। जी, ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त एक खातून सेनेटर की बड़ी धूम है और इनका नाम है सेनेटर फातिमा पैमान। फातिमा पैमान जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़े होकर एक बात की और वो बात थी फ़लस्तीन की हिमायत, और इसी वजह से आजकल ये ख़बरों में है। और बुनियादी तौर पर ये लेबर पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और हुकूमत भी लेबर पार्टी की है, और उन्होंने अपनी ही पार्टी के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़, यानी कि इसराइल की हिमायत के ख़िलाफ़ अपनी पार्टी से जो है वो अलहदगी इख्तियार करके एक नई सियासी जमात बनाई है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियाज़ वॉइस। सेनेटर फातिमा पैमान काबुल में पैदा हुई, फिर पाकिस्तान आई और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गई। आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर पैमान, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। Walaikum salam. I'm very well, thank you. Thank you so much for having me on your show. So, Fatma, can we start with your journey? You were born in Afghanistan in Kabul, then you moved to Pakistan, then you moved to Australia, and now you're making waves in Australian politics. So, how was the situation in Afghanistan when you left that place? So when we left the country to Peshawar in Pakistan, the Taliban had taken over. This was back in the 1996 time frame. And it was a very difficult time. So my family had to flee to Peshawar. It was just at that point, my mum, me and my younger sister, who was soon born, and the rest of the extended family. It was a very difficult time, as many Afghan refugees would understand. And Pakistan being our neighboring country has always been hospitable and caring. And it has been wonderful to be able to seek security and safety there, albeit it was for a short period of time, because in 1999 my father then traversed the Indian Ocean by boat to find safety for his growing young family. And for us, he landed in and arrived on the shores of Perth, which is in Western Australia. And soon after, spending some time in detention for about 2 to 3 months, he was then able to work around the clock, save enough money to be able to sponsor me, my mum, and my 2 younger siblings over to Perth to join him. And in 2003, when I was 8 years old,
we reunited with my father here in Western Australia. Okay, so you moved to Pakistan then. Tell me, how did Pakistan treat you? And maybe you can respond in Urdu. मेरा उर्दू उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगी. I was in pre-primary, and I went to school there. I had an incredible time. Obviously, my Urdu was quite fluent back then, and I remember there's a photo of me, and I can provide it later, but I was appointed as class commander. So even from a young age, I think I liked to take leadership roles. And it was a wonderful time. I remember playing cricket in the streets, in the alleyways with the other children in the neighborhood. I can't say that the passion of cricket has maintained and remained, but I definitely have fond memories. I love imli. Imli was my favorite snack. I remember after school every day we'd stop at the stalls near the house and buy some imli. And chili milli was the other one with little jellies. Yes. So I do have fond memories. And of course, the Pakistani soap operas and shows were a staple in our household growing up. So for us, I've had only fond memories of Pakistan, and I do hope to visit and see how far Pakistan's come sort of in the last 2 decades that I've been away. You should come here. So then you moved to Australia, studied there, worked there, and you joined politics. So did you always want to join politics, or was it due to some certain circumstances? No, so I never thought I would ever join politics and become a politician. For me, it was either medicine, law, or engineering. Like many typical parents want their children to go into those three fields. But for me, it was medicine. And so I tried very hard, sitting various entrance exams. But, you and I plan, but Allah's the best of planners. Absolutely. And so for me, it appeared that Allah subhanahu wa ta'ala had greater plans for me to enter politics. It never seemed like an attractive avenue for me because I never saw any hijab wearing politician. So it just felt like Australia isn't there yet, isn't able to accept anyone who looks like me to join politics. But I was definitely proven wrong. I went through university life experiencing racism and discrimination because of the hijab I wore. And that propelled me to continue breaking down stereotypes and ensuring that the destigmatization begins here at home, where we're educating people about what the hijab is. As Muslims, what does it mean to be a Muslim Australian? How can we balance both identities together? And so it was a wonderful journey, and that, we have quite a lot in common. Just because I wear a hijab doesn't make me any different or any less of an Australian. Now, in sort of going through university life and volunteering, the turning point that occurred in my life was when my father got cancer in 2017, and within 11 months of chemotherapy and treatments and bone marrow transplant, he passed away. Allah yarhamu. And it wasn't until 2019 where I really took it on myself to get involved and leave the world a better place. My dad was only 47 years old when he passed away. I don't have any guarantee that I'll live to see 47. So how do I make sure that I'm making the most of every moment? And so for me, it was about giving back to the community, empowering other people. And that's where my journey into politics began, where I was just handing out flyers at the election, telling people to vote for the Labor Party. And the reason why the Labor Party had such an appeal to refugees and migrants is because there was this conception that the Labor Party
was accommodating to refugees and migrants. And then before I knew it, I was in the union movement as a political organizer. And it was in 2021 that I was tapped on the shoulder, asked to put my name down as number 3 on the Senate ticket. But nonetheless, you know, once the election was over and I got elected, I feel like the true reality of politics hit me. Coming to your famous fiery speech in the parliament about racism, and it went viral over the internet, and everyone was watching the speech and talking about you. So, do you feel that there is a certain racism in the Australian society because your speech and your conflict with Senator Pauline Hanson tells us that there is a general issue of racism in Australia? I mean, I wouldn't generalize it to that extent because I think racism and discrimination exists in small portions in various amounts in various parts of the world. But I think within the Australian context, Pauline Hanson, to your viewers who may not be familiar with her, about 5-6 years ago, she wore the burqa inside the chamber, and it was basically a stunt to call for a ban on people wearing burqas. And burqa is it's obviously a very personal, private, intimate, religious piece of garment. But for her to ridicule something so sacred, it was quite abhorrent. And it's bizarre that I was elected to that same very place that she ridiculed all Muslims. In fact, she had said that, you know, Muslim or Islam is a disease that needs to be eradicated. So all these sort of racist rhetoric needed to be called out. I feel like Pauline Hanson had it way too good for too long. And like in that speech, I think it was important for us to, you know, highlight the facts. You know, I used Pauline Hanson's statements from various speeches to indicate to her that, you know, what you're saying is isolating and alienating groups of people within the Australian population because of where they're from, because of the colour of their skin or their faith. And in fact, Senator Mehreen Farooq, she recently won a court case against Senator Hanson that basically, you know, the judge came out and essentially said that what Senator Hanson was saying, or the character that she portrays, is of somebody who, you know, spreads hatred and vile commentary. So I think as politicians, it's within our duty and responsibility to ensure that we are spreading peace and cohesion. We are ensuring that we bring people together, that we're not sowing seeds of division. And instead, we are using every opportunity to ensure that there's harmony and peace on our shores. Absolutely. Not alienating one group over another. And I mean, we've seen that with the situation in Gaza, where the Russia and Ukraine war broke out, and all the Western countries, including Australia, were quick to jump at the defense of Ukrainians, and rightfully so. But when the same situation broke out between Israel and Palestine, it almost appeared that there was this double standard from the get-go. There was this weird prioritization and selective favoritism that we were starting to see. All the support and backing that Israel was being given was in contrast to all the crimes that they were committing and the atrocities that they were inflicting on the Palestinians. Senator, you crossed the floor on the same issue of Israel-Palestine conflict, and we all know that politicians mainly are supporting Israel. But what about the general people of Australia? Where do they stand in this conflict?
I think there's growing support. We are seeing so many more people come to rallies and marches every single weekend. Your ordinary Australian that once upon a time had no idea what Palestine or Israel were are now tuning in because they see on social media the babies that are pulled out of the rubble, the disfigured and dismembered family members just crying, and the devastation and the havoc that Israel is inflicting and imposing on the Palestinian people. Human rights organizations have come out calling this situation, almost apocalyptic, but also that this apartheid needs to end. And what we don't see is enough action from the government to make it stop what it's doing. Everyday Australians are waking up to the reality and saying, why is it that Palestinians' lives matter less than Ukrainian lives? Why are we not seeing parity? And I'm just grateful that people are educating themselves and researching rather than accepting what the right-wing media is portraying to them, because authentic, true, unbiased journalism is so rare these days. A lot of independent outlets are coming out here in Australia where they are taking the onus on themselves to give Australians the unfiltered, unbiased, and honest accounts of what's happening on the ground. Okay, and can you tell us what is the hindrance in recognition of Palestine as a state by Australia? I think there are multiple factors. The first would definitely be that Australia has been following in the footsteps of the United States of America and the UK, and the new party that I've established, Australia's Voice, we will ensure that we advocate for Australia being an independent foreign policy, for it to adapt an independent foreign policy that's in the best interest of Australians, not of an external power. The second factor I think that's impacting is the lack of courage and political will that this government is showing. So I know that this was the government that I was elected under with the Labor Party, but they've clearly shown that they do not stick to their own principles. The party platform and the policies that they were elected on, they have turned their backs on it. So I've come across many disgruntled and angry Labor voters who are turning their back on the party because they're not seeing any authenticity and courage. And finally, I think it really comes down to the Zionist lobby groups who are quite powerful and influential, and they have fingers in all pies, both in the Labor camp and in the Liberal camp. And these both major parties are basically attuned to what the Zionist lobby want them to do. Now, in saying that, they are starting to realize post the US and UK elections that our federal election in May of 2025, I mean, it could happen before May, the Prime Minister hasn't called the election, but that election could see the government losing the majority power that it's got in the House of Representatives, which means that now they are actually scared and taking the matter of human rights more seriously, and the matter of justice, because at the end of the day, it comes to the justice that needs to be served with all the atrocities that have been inflicted by Israel. And is that going to translate into the government losing its majority? Perhaps it might. If people are really angry and those votes really manifest into the rage that they're feeling, it could go to the Liberal Party. I mean, that would be the worst case scenario. But in saying that, it is going to be an interesting election and everyone is gearing. Okay, and what is your party, Australia's Voice, offering to the people? What is your manifesto? What is the Payman actually?
the Payman. Excellent, I guess, segue. In terms of what we're offering to provide, we have 6 pillars that dictate what our policies are going to look like. So, Australia's Voice wants to be the party of being bold enough to do what Labor could not do, but more practical enough to actually get outcomes for Australian people. So we're going to be practicing a lot of the courage that basically initiated and formulated and gave birth to this party to do what is necessary and what's right by Australians. The second pillar is about common sense. You know, a lot of people say that we need to bring common sense back into politics. We need to just be straightforward. We need to do what needs to be done. The other pillar is generational change. When we're thinking about policies, we're not going to just solely focus on the right now or the short term, but rather look at how this is going to impact the generations to come. We have a sense of duty of care to the up and coming generations that are going to inherit the problems that we leave for them. Something that a lot of major parties have lost touch is being people focused, and that's our fourth pillar. The fifth pillar is justice and accountability, making sure that we keep the government in check and that we conduct ourselves with the frame of justice in mind, whether it's justice for climate, justice for our youth, justice for our senior Australians, or justice for workers and everyday people who just want to make ends meet. Very important. And finally, it is the whole idea of the culture of innovation, right? Like, innovation shouldn't just be tied to business or industry. It could be involved in politics. It could be included in the way we think of coming up with solutions. You know, Einstein famously has said that doing the same thing over and over again and expecting a different outcome is the definition of insanity. So those are the 6 principles that we're basing our policies on. And when we're choosing our candidates, it's going to be very much on value alignment and merit. We are going to ensure that our candidates are representative of all Australians, not just a set few. And I'm really, you know, fighting with that whole idea that Australia's Voice is not a faith-based party. Australia's Voice is for every Australian. And in fact, when we hit the ballot boxes, whenever the election is, we're going to make sure that we keep an eye on the government, we hold them to account, and that we represent the voices of everyday Australians. Thank you, Senator Fatima Payman, for giving us your time, and best of luck for the elections. Thank you so much, Ovais. जी नाज़रीन, सेनेटर फातिमा पैमान से आपने गुफ्तगू सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।